अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अतर अहमद और आज हम जो हमारा सेशन है startup.pk पिच फेस्ट 8। startup.pk पिच फेस्ट जब स्टार्ट हुआ था, ये कोरोना के उन टाइम्स में लॉन्च हुआ था जब सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए थे और स्टार्टअप्स को पिच करने का मौका बहुत कम मिलता था। उसी में ही हमने startup.pk का पिच फेस्ट का सबसे पहला सेशन रन किया था, जिसमें हमने जो स्टार्टअप्स को बुलाया था उन्होंने अपने आइडिया पिच किया था और वो फिर जजेस उनको फीडबैक्स दिए थे। हमारे आज के दो जजेस है इज़ा अहमद जो कि फाउंडर और सीईओ है जूसी गॉसिप्स के, और मैं दावत दूंगा मैम इज़ा अहमद को कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें और अपने एक्सपर्टीज एरियाज बताएं। मैम इज़ा। Assalamu alaikum everyone. I've been now associated with both Masood Saab's Change Mechanics and TIE for a while as a mentor and as a judge. Hospitality is one of my areas of expertise. Otherwise, hum young startups ko, I've been mentoring them for a while. So I would like to believe that I think we've seen, except for a very high level of tech startups, I think I enjoy mentoring the variety of startups that come, and mera apna jo area of expertise hai wo hospitality hai, because I've been running a cafe for a very long time. It's now nearly 7 years. So other than that, I'm a homemaker. I'm also a mother, so I also understand the needs of the younger generation. So that's about it from my side. Wonderful. Thank you very much, ma'am, for joining us. Next हमारे साथ है हेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस मूवमेंट सायरा कयूम। एंटरप्रेन्योरशिप के वो टीचर भी रह चुकी है, वो मेंटरशिप और कोचिंग में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो है अपना आइडिया और एक्सपीरियंस से गाइड करती रही है। सो मैम सायरा क्यों अगर आपका अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आपके एक्सपर्टीज एरिया हमें पता चल जाए। Assalamu alaikum everyone, this is Saira Qayyum. Currently I'm heading a WeCon movement, that is Women Entrepreneurship Movement. अच्छा, स्टार्टअप के साथ सफ़र अब तो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं कि हम स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहे हैं, चेंज मैकेनिक्स के अंडर भी, startup.pk के अंडर भी, WeCon के अंडर भी, और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी ट्रेनिंग्स दे रही हूँ और 1-to-1 कोचिंग देती हूँ स्टार्टअप्स को। एक्सपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ओवरऑल बिजनेस मॉडल की धज्जियाँ उड़ाने में, ठीक है। तो जब भी कोई आइडिया मुझे सामने कोई लेकर आता है तो हम उसके बिजनेस मॉडल को जो है स्टेप बाय स्टेप उसको इन डेप्थ उसको स्टडी करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं। सो वैसे अगर आप लोगों ने पूछना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना क्या बिजनेस है और उसकी क्या एक्सपर्टीज है, तो अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। उस इंडस्ट्री को मैं इनसाइड आउट जानती हूँ। उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई स्टार्टअप है या हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप है, और अब करंटली चूंकि कोविड सिचुएशन है और हम बार बार बात कर रहे हैं अपनी हेल्थ की और अपनी जो हमारी इम्यूनिटी है, सो मैं कुछ फूड स्टार्टअप्स में भी इस वक्त कुछ फूड स्टार्टअप्स को कोच कर रही हूँ और मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि कुछ फूड की कोई चेन ऐसी बनाई जाए जिसमें जितने भी नुस्खे हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं वो कहीं वन स्टॉप सोल्यूशन और हम वहाँ से कुछ ऑर्डर कर लें। तो करंट पैशन तो मेरा फूड से रिलेटेड है। उसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना, क्योंकि पाकिस्तान में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। सो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की एक ट्राइब भी है, वी ट्राइब। अगर आप लोग सुन रहे हैं मुझे और आप इंटरेस्टेड हैं एक लार्जर पूल का पार्ट बनने में, क्योंकि अकेले जब आप सफर शुरू करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली इफ यू आर फीमेल, तो आपको समझ नहीं आती कि कहाँ से पहला स्टेप लिया जाए। सो वो जितने इनिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको हम काफ़ी हद तक उसमें हेल्प कर लेते हैं और आपको काफ़ी अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। सो ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। अगर टाइम ज़्यादा है तो मैं और बोल सकती हूँ, ठीक है। आज मेरी एनर्जी थोड़ी अच्छी है, मैंने नींद पूरी की हुई है अपनी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। और जो सुन रहे वी ट्राइब, नाम याद रखिएगा, वी ट्राइब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम सायरा के ईमेल जो है हम चैट में भी शेयर कर देंगे, तो स्पेसिफिकली जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है वो फिर रीच आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अप वी हैव अ जज जो हमें startup.pk पिच फेस्ट 1 से हमेशा ज्वाइन करते आ रहे हैं। उनकी हमेशा ह्यूज सपोर्ट रही है स्टार्टअप्स को मेंटर करने में, उनके साथ कनेक्ट होने में। वो है सर यूसुफ हुसैन। सर यूसुफ हुसैन है फॉर्मर सीईओ इग्नाइट के। आई वुड गिव द चार्ज टू सर यूसुफ के अपना बाकी तारुफ कराए और अपनी एक्सपर्टीज एरिया पर। यूसुफ सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ हुसैन है और इट्स अ प्लेजर टू बी हियर।
and listen to the creativity and energy of startups. اور میں اس وقت senior partner ہوں of Jump Curve, which is jump-curve.com, or we help corporates and startups innovate and work together, including through investments. Thank you very much, sir, for joining us. Thank you very much. So اس کے ساتھ میں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں startup.pk کے پچ فیسٹ کے. startup.pk پچ فیسٹ نے ابھی تک ہمارے ساتھ ریسیو کیے 246 اپلیکیشنز. ان 246 میں تقریباً 120 ایسے ہیں جو کہ خالی اس پچ فیسٹ کو آبزرو کرتے ہیں اور اس میں جتنی بھی پچز ہوتی ہے اس سے وہ کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے آئیڈیا میں اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو باقی اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے اپنی ریکویسٹ کی ہے پچ کرنے میں. ہم ہر پچ فیسٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ 6 to 7 اسٹارٹ اپس کو ایکوموڈیٹ کر سکے. آج کے پچ فیسٹ میں ہمارے ساتھ مثلاً 7 اسٹارٹ اپس جو ہے وہ پچ کر رہے ہوں گے. پچنگ کا ٹائم جو ہے 3 منٹس ہے. میں جو ہے ہر اس کے ساتھ ایک کوڈنگ سگنل وہ یوز کر رہا ہوں. جب آپ کا 1 منٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو گرین سگنل دوں گا. جب آپ کے 2 منٹس ہو جائیں گے میں آپ کو جو ہے یلو سگنل دوں گا. اور جب آپ کے 3 منٹس ہو جائیں گے میں آپ کو ایک ریڈ سگنل دوں گا. اس 3 منٹ کے مارک کے بعد آپ کے پاس 10 سیکنڈز ہوں گے ٹو ریپ اپ یور پچ. اگر وہ آپ ریپ نہیں کریں گے میں آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ کی پچ روک دوں گا. اس کے بعد 8 to 10 منٹس میں ہمارے ججز آپ کو فیڈ بیک دیں گے اور وہ آپ کو پھر اسکور کریں گے. کی جو ججز کی جو اسکورنگ ہوگی وہ ہوگی 1, 2 یا 4 اور 5. 1, 2 مطلب کہ ایوریج سے تھوڑا سا کم اور 4, 5 کے بیسٹ اور ویری بیسٹ. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پچ سے سہرش رضا. سہرش رضا آپ ریڈی؟ جی بالکل. سوری جی سو آپ اپنا اسکرین. جی وی کین ہیئر. میری اسکرین ویزیبل؟ جی آپ کی اسکرین اسٹارٹ ہوگی. اوکے پرفیکٹ. Wonderful. So your time starts now. Assalamu alaikum. I am Sarish and I am the founder of BizBee. Now before going further, I would like to tell you a true story as to how BizBee was actually born. So the problem identification basically came about 10 months ago when I was about to get married. That was the first time in my life that I actually went out to shop. So when I went with my mom, I was flabbergasted at the amount of money that the shopkeepers were asking for this one dress that I was probably going to wear once or at max twice in my life. So fast forward, I was scrolling through Facebook during this time period and I saw that this girl had put up her wedding dress for sale. And that idea intrigued me to no ends. So what I did was I called up this friend of mine who had gotten married a while ago. I asked her if she was willing to sell her dress. She was kind of surprised at first, but she was then like, why not? So I ended up buying that dress. I don't need to tell you guys how upset my family was, but that was the best decision I made. And upon further research, I found that there were many other girls who were not only looking for cheaper wedding dresses, but this problem actually trickled down to daily wear apparel as well, especially for women who are university going and office going women who had to constantly revamp their wardrobes. Which is why we eventually came up with a platform where women could have access to pre-loved dresses where they could buy, sell, helping them earn money, save money, and protect the earth one dress at a time. Now, the reason that we married this idea was when upon further research, I found out that fast fashion was the second biggest polluter of fresh water in the world with 80 billion pounds of waste produced annually globally. And this number is increasing exponentially every day, with one t-shirt taking 2,500 liters of water to produce, which is equivalent to one person drinking water for 2.5 years. So that's why we came up with a very simple motto, give one plus take one is equal to happy earth and a happy us. So taking that forward, our team primarily consists of 3 people. Me, the co-founder, I have 3-4 years of digital experience. I have Zain, who has 5 years of experience, sales experience with startups, and I have Sumbul, who has 4 years of technical experience.
Now, the last point that was asked was the effect of COVID on my business. So pre-COVID, Bizbee was basically the second-hand market was basically a $34 billion market. But post-COVID, it is now a $68 billion market, even surpassing fast fashion. So this is the perfect time to exploit this market and cater to the increasing demands of our customers. Wonderful. So Sehresh, I just want to confirm, आपकी slide एक ही थी, आपने बीच में change की, क्योंकि हमें आपकी एक ही slide नजर आई। I couldn't. I'm sorry. I was trying to pressing the button और change नहीं हो रही थी. I don't know if it's slow. Internet का मेरा मसला था क्या था? ये अभी भी नहीं हो रही. I'm sorry. थी तो ज़्यादा. Sorry. तो हम feedback का session start करते हैं. सबसे पहले इज़म है. अब हो रही है. My bad. Sehresh, आप जरा अपना थोड़ा सा business model मुझे explain करेंगी? So you're just getting clothes, people are selling clothes, and you're then selling them further, and you're keeping a little margin. That's your business model? Yes. So we're basically charging a commission from the seller. ठीक है. And how are you figuring? How are people reaching out to you, through an app or through what? It's a website. Okay. Yeah. And आप उसको, how do you make sure कि when the product comes to you, it's not damaged? या अगर damaged आए तो what do you do then before you sell it? So what happens is, so there are two technically business models that are applicable for us. One being कि हम लोग अपनी inventory रखें अपने पास. So whoever uploads a dress, we call it in our inventory and keep it. लेकिन हम लोगों को हमें additional inventory cost बहुत पड़ती है, and that will be a fixed cost for us. So what we do is कि जब हमें किसी dress का order आता है, we first get it called into our office. We get it checked, quality checked. अगर तो उसमें कोई flaw होता है, हम वापस कर देते हैं, buyer को बता देते हैं कि the dress had a flaw, which is why we're not shipping it out to you. And then we send it back to the seller and then give them a warning as well कि आइंदा कभी dress में issue ना हो. So you don't do fourth hand, you just do second hand. We just do second hand. Yeah. One change of dress. It doesn't. Okay. All right. Yep. Saira? So next. Okay, I had a question. Can you share some numbers? Over the last, let's say, 6 months, what's your transaction volume? Is it, what's the growth rate and so on? Okay, so this was the slide that the traction that we had 3 months ago. That was a total of 311 dresses from the time that we have started. During COVID, this number is now at bare minimum 4 to 5 sales per day. It has increased to that post-COVID, which is the last 2 months for us. So there's an increasing demand for secondhand clothing because obviously people get the same branded dress for a 50, 60, 70% slashed price. And then we always assure quality, making sure that the dress is not damaged. If it has a minor damage, we tell it to the buyer. If they don't have an issue, then we ship it out. If they do have an issue, we don't ship it out. So technically, I have seen a very big spike. And then upon, again, further research, I found out that this is now a global shift of trend. Whereby the second-hand market is now surpassing the fast fashion market by more than $20 billion. So this sorry. आपका अपना कितना है? So basically 311 was pre-COVID. I am sorry, I cannot tell you the exact number. I haven't calculated, but approximately in the past 1.5 months, we've been getting. In the first month, we were getting 2 dresses sales per day. And then in this last month, in the last 2 weeks, actually 2 to 3 weeks, we have been getting in June a bare minimum of 4 to 5 sales per day. Yeah. And in which city are you based? We're based in Islamabad, but we our services are nationwide. So somebody will TCS you the dress to Islamabad, you'll check it, and if it's okay, you'll TCS or whatever to the buyer, else you'll TCS it back. No, so basically at this point in time, we are partners with BlueX.
for transport. So we get the dress picked from the seller's place also, then get it shipped to us, and then we send it out to the buyer. Okay. Yeah. Okay, Next sir, time. question. Okay, so what are you looking for? I mean, are you looking for feedback? Are you looking for investment? I mean, what's the goal of your pitch there? At this point, we are, yes, looking for, so this particular session was primarily only based on our short pitch. So that's how I prepared it. But generally, as a startup, yes, we are looking for investments, because at this point in time, obviously, we see the trend is growing. So we want to obviously aggressively hit the market at this point in time. Which is why we have, even in the past 2 months post-COVID, we worked on our branding. We have worked on making this into a brand which is not cheap, but it's something that's fashionable, responsible, sustainable, so that not only the middle or lower class people want to follow this trend, but it should be something that even the upper middle class can do it, just for the fact that this is smart buying. This is not cheap buying. So we've rebranded, we've done everything. Numbers have increased, the traction has increased, which shows that there is a market need, which is why we're primarily looking for investment at this point. One very quick question. Yeah. Can you just just give us an idea कि आप एक dress कितने का, you're buying it for how much, and then you're selling it just tentatively, any dress, एक average, just. Yeah. So technically we're not buying it, but I'll tell you the basic average amount. So for a casual dress, for like kurtis, for a bridal, the average price, sale price is about 30,000. 25 to 30,000. Is how much? Your commission? Sorry? Our commission is 15%. Then when we go towards party wear, the price range is between 5,000 to 7,000 average price. Do you think that percentage is sufficient for you to be able to start making a profit and cover all your costs? No, at this point, no, it's not. But at this point, our main concern is basically getting more good sellers and getting buyers for us, because this is okay. So the biggest hurdle for us as a business was to break the taboo of wearing secondhand. Even if I talk to my family members that have a severe issue with buying secondhand, my own circle has an issue. So that particular social stigma that's attached to secondhand buying is one of our first hurdles. So at this point in time, our main aim is to get a good inventory so that people know that, okay, this is not something cheap. यहाँ पे भी sapphire पड़ा हुआ है, brand new shirt पड़ी हुई है, एक दफा किसी ने पहनी दोबारा लगा दी because they don't want to repeat it. ये वाली भी हमारी बहुत बड़ी क्लास है जो एक कपड़ा दोबारा repeat ही नहीं करती. So even if they start selling, my only question here is कि how many clothes would you turn over in a month? What do you need to turn over in a month to be able to break even? Honestly, at this point in time, we're nowhere near breaking even, because we're actually incurring double costs for the transportation, for which we have a long-term plan, again, for which we need an influx of money so that we can implement that plan. But at this point in time, we are in a loss. We're not breaking even. So how do you want to go forward with this then? So how do you self, because agar ab aap keh rahe ho, the volume is also increasing, your business volume is also increasing, aap ye keh rahe ho कि थोड़ा destigmatized भी slowly हो रहा है, because if the volume is increasing, that means you're getting a good response. The point is, is it your percentage that is not high enough, or is it the pricing that is not done correctly for the product that you're reselling, or is it because the volume is not there even then? Okay, so there are two issues. Number one being, yes, the commission is at this point very small. So generally, how we should put the commission is the lower the price of the dress, the higher should be the commission. There should be a bigger commission for low price dress, and then the higher the price goes, the commission should lower. That's generally how pricing is done for marketplaces. But at this point in time, we don't want to do that, but eventually we will increase the commission as well. And the second main cost that we're incurring is in the quality assurance process. So because we get it shipped first to us and then we ship it out to those, so that's basically a double delivery cost for us. So we have a game plan for cutting down that cost as well.
which we would want to do 2 to 3 months down the lane. But in these 2 to 3 months, what we want to do is we want to generate the maximum amount of volume for acquisitions as well, for sellers as well, and for buyers as well. Once we get that done, then we can move towards the next step of now then cutting down our costs, which is all we know exactly where we want to cut down our costs. First, we're going to raise the commission. We're going to charge commission for dresses being promoted on our socials. And then secondly, we want to cut down on the transport costs. So we have a plan set for that as well. Do you feel that because people, आपका इस वक्त COVID में इसलिए बढ़ रहा है because people do not have access to going to the market, or is it because their mindsets, you've been able to achieve changing their mindsets? No, actually the fact that they can't go is not an issue at all, because all other brands have gone online as well. Khadi is online, Sapphire is online, everyone's online. I'm talking because that's where your margin is going to be the most. That's where you'll make most money. So I'm talking of bridal wear? I'm talking of bridal wear, because that's where prices go high. So वहाँ पे I think the margins are also higher. जो आपके ready to wear हैं, उसमें तो आपका margin वैसे भी it's not very high ना. तो उसमें the cost of the product itself is not going to be high. The first hand इतनी नहीं होती, जब वो second hand होती है naturally वो कम होगी, so आपका profit margin कम होगा. What I mean to say is कि आपकी जो bridal wear की pricing है, वो क्या आपको लगता है कि जो आपके पास लोग आ रहे हैं ज़्यादा, is it because उनके पास market access नहीं है to get personalized clothes made, या to go to the markets to get the dresses made, or is it because you have been able to create a dent and encourage second-hand purchases? Okay, so basically again, this is an assumption, so I won't say this is a fact that I'm stating, but what I feel is the main thing that we ended up resolving was the fact that during this time, people's pocket sizes started shrinking, employment opportunities lessened, people did not know whether they're going to have jobs 2 months or not, 2 months down the lane or not. So people have now started trying to save. So probably that is the mindset that drove them, that they're probably getting what they would get in the market for, say, 1 lakh rupees for 30,000 or 25,000. So the mindset of being price sensitive is primarily, I think, what we've hit on after post-COVID. But again, I'm not saying this is a fact I'm stating, because that I can only say once I've talked to maybe 100 customers, which I'm in the process of actually. So I actually want to understand as well this trend that has changed post-COVID for Pakistani customers. So yeah, but I think it's the price sensitivity that we hit during this time. One last question. How are you marketing your product, your business? Only on social. We're on Instagram, we're on Facebook, and those are the 2 only channels that we're focusing on. At the moment, we're now in the process of partnering with bloggers and influencers as well, because this is during COVID. All of these big influencers like a Wardrobe Affair, No FOMO, all of these are also supporting secondhand buying and then sustainable living, which is again now a global something that's being talked about globally. Even in places like Paris, the trends have changed and are more now inclined towards secondhand buying, which is the hub of fashion. So yeah, we're in the process of partnering with bloggers as well at this point. But generally, right now, we're only on socials. That's it from my side. Anybody else? Wonderful. So, Sarah, ma'am, आपका कोई feedback? No, I'm good. Thank you. ठीक है. So, सारे judges ने score दे दिया है 2-2-2. Right. So, wonderful, Sehrish. आप feedback को incorporate करें और फिर next pitch fest में हम आपका जो है वो sessions लेंगे. Thank you. So, thank you very much. Next हमारे कुछ startups और join कर रहे हैं, उनके साथ कुछ connectivity issues आ रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तंजीला, सलमान और रफाक. अगर आप में से कोई जो है पिच करना चाहता है.
جب تک کوئی آتا ہے ہم سیرش کو ایک بات بتا دیں اگر جی میم بالکل بالکل یا چلیں آف کیمرا بتا دیں گے بعد میں. شور اوکے سو ویل باقی اسٹارٹ اپس ہمیں وہ جوائن کر رہے. سو اس میں جو ہے میں بس کچھ ججز سے جو ہے ایک نارمل سا جو ہے کوسچن جو اسٹارٹ اپس ہمارے پاس کافی آتے اور جو ہم سے پوچھتے. سو میں سارے ججز سے جو ہے کچھ انڈیویجولی وہ جو کوئریز ہمارے پاس آتی وہ پوچھ رہا ہوں گا. تو سب سے پہلے میرا جو کوسچن ہوگا وہ سارا میم سے ہوگا کہ کافی زیادہ اسٹارٹ اپس آتے جو ہم سے پوچھتے کہ ہم نے جو ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کو انیشیٹ کس طرح کرنا ہے. ان کے پاس جب کوئی آئیڈیا آتا ہے تو وہ ان کو آپریشن کرنے کا یا جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. سو آپ کو کیا لگے جب بھی کوئی فریش اسٹارٹ اپ آتا ہے اس کے پاس ایک اچھا آئیڈیا آتا ہے وہ کیا سٹیپس لے کے وہ اس آئیڈیا کو جو ایگزیکیوٹ کر سکے؟ اوکے سو دیکھیں اسٹیپ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ میں آئیڈیاز تو بہت آ رہے ہوتے ہیں, انسان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتا ہے کہ لیٹس جسٹ اسٹارٹ اٹ اور بڑا اچھا آئیڈیا ہو کیونکہ اپنا آئیڈیاز اچھے ہی لگتے ہیں. میرا خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے, جسٹ جمپ انٹو سم تھنگ وداؤٹ ڈوئنگ اینی پراپر ریسرچ. سو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جتنی ان کی انرجی شروع میں ہوتی ہے, جتنی تیزی سے وہ اس چیز کے اوپر اپنا محنت شروع کرتے ہیں اتنی تیزی سے وہ اپنی انرجی لوز بھی کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک اسٹیپ نمبر 1 مارکیٹ ریسرچ ضرور کریں. اچھا دوسرا جو میں مشورہ دیتی ہوں اسٹارٹ اپس کو وہ میں یہ دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے بوتیک اوپن کرنی ہے, یا فار ایگزامپل آپ نے بیکری اوپن کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے, آپ اپنی کوئی اکیڈمی کھولنا چاہ رہے ہیں, اسکول چھوٹا کھولنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ جس بزنس میں آپ اندر انٹری جو آپ کی جس انڈسٹری میں ہو رہی ہے اسی بزنس میں آپ کچھ عرصے یا تو انٹرنشپ کر لیں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے, یا اسی سے سملر بزنس میں جو بزنس اونر ہے اس سے اچھی خاصی کوئی گپ شپ لگائیں اگر انٹرنشپ یا جاب نہیں کرنا چاہتے, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کے ایگزیکٹ پرابلمس کیا ہیں اس بزنس کے. کیونکہ اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر مجھے اپنا کیفے اوپن کرنا ہے تو مجھے بہت شوق ہے, اور آج کل میں نئی نئی ریسیپیز بھی دیکھ رہی ہوں کچھ تھوڑا بہت جب ٹائم ملتا ہے مجھے ویکینڈ پہ, تو اگر مجھے اپنا کیفے اوپن کرنا ہے تو میں ایزا سے ضرور پوچھوں گی کہ ایزا مجھے بتاؤ کہ جوسی گوسپ کی جو جرنی تھی وہ کیا تھی, کیونکہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میرا تو صرف شوق ہے نا اوپن کرنے کا. ایزا نے وہ جرنی پوری خود سے دیکھی ہوئی ہے. سو جو باتیں وہ مجھے بتا سکتی ہیں وہ مجھے اور نہیں کوئی بتا سکتا. تو بجائے اس کے کہ وہ غلطیاں میں کروں سالوں میں, تو کسی بھی ایکسپرٹ سے مل کے آپ تو اپنا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنا ایکسپرٹس کا جو نیٹ ورک ہے اس میں آپ ضرور رہو, بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ٹچ رہو ان کے ساتھ. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی پلیز, اگر آپ مجھے اجازت دو, کہ ہمارے ہاں دو پرابلمز ہوتی ہیں. جب کوئی بچہ اسٹارٹ اپ کرتا ہے مارکیٹ ریسرچ تو بہت کم کر کے آتے ہیں. دوسرا دے لو کاپیئنگ آئیڈیاز. سو واٹ دے ڈو از اٹس آلموسٹ لائک چھاپا 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 چھاپا. جیسے اب اس نے فار ایگزامپل ریسٹورینٹ کا کہا ہے, تو ریسٹورینٹس بھی یہ کرتے ہیں وچ از ویری سیڈ بیکاز اٹس اے ویری ہائی انویسٹمنٹ بزنس, کہ آپ نے کسی کے ریسٹورینٹ میں گئے, ان کا ہیڈ شیف یا ان کا کوئی شیف توڑا, اس کو لے آئے, ان کا ہی مینیو چھاپ لیا, نام بدل دیا اور نیا کھول دیا. تو this is where we all go wrong and that is why many businesses fail. I always believe market research کے ساتھ please تھوڑی سی آپ کی اپنی جو individuality ہے that should be reflective of whatever your business is. دوسرا ہمارے ہاں اسٹارٹ اپس ایک کام کرتے ہیں, وہ ہم اکثر ججز یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ سوشل ایلیمنٹ کو صرف فار دا سیک آف
sympathy लेने की from the judges, social element add करते हैं. They have to understand that they are a business model. So उनका जो prime जो हमें चाहिए होता है कि वो पैसे कैसे बनाएंगे, how are they going to be sustainable, how will they make it in the market, how are they going to face the cutthroat competition. दूसरा, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है. दैट इज वन प्रॉब्लम दैट हमें हमेशा स्टार्टअप्स के साथ आता है कि इनको प्रोडक्ट क्लैरिटी नहीं होती. प्रोडक्ट ये ले आते हैं क्योंकि इनके अपना उसके अंदर एफर्ट कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं उसकी रिसर्च पे, और उसके प्रोडक्ट की क्लैरिटी में, प्राइसिंग में उसकी क्लैरिटी नहीं होती इनके पास, उसके अपना आइडिया में क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि किसी का आइडिया पकड़ के ले आए होते हैं, वो किसी का चल रहा होता है, उसी को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और ले आते हैं, और फिर उसके अंदर एक सोशल एलिमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डालते हैं. सो ये हमें एक स्टार्टअप्स के साथ, स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से यंग बच्चे आते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं, this is something that they all need to look into. They must look into this. देखें, the world is full of different things that you can create. इतनी ingenuine चीजें हो सकती हैं. So please थोड़ा सा research, थोड़ी सी market research, थोड़ा सा आपका अपना effort put into that, कि it should be reflective of who you are. Then passion नहीं होता. मेहनत से हम बहुत घबराते हैं और passion से भी बहुत घबराते हैं. तो ये मेरे दो ये पॉइंट्स हैं. पैशन नहीं होगा तो बिजनेस इनकी चलेगी नहीं. बस वो आएंगे, हमें पिच देंगे और चले जाएंगे, एंड इट जस्ट फिजल्स आउट समवेयर इन द मिडल. वही स्टार्टअप्स आप अभी भी देख लें, हमने जितने स्टार्टअप्स में जितने लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, स्टार्टअप्स वही सक्सेसफुल रहे हैं जो बहुत पैशनेट थे अपने काम के बारे में, जिनको बहुत क्लैरिटी थी, जिन्होंने बहुत रिसर्च किया, एंड दे वर वेरी श्योर ऑफ व्हाट दे वर डूइंग. So, you know, that is very important, and I feel that is lacking in young startups that come up. Wonderful. यूसुफ सर से मेरा एक क्वेश्चन है, सर अगर हम कोविड-19 को देखें तो काफी सारे चैलेंजेस स्टार्टअप्स जो है वो फेस कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े चैलेंजेस अभी कोविड-19 में स्टार्टअप्स को क्या फेस हो रहे हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? जी, मेरे ख्याल में पोस्ट कोविड जो है, कुछ स्टार्टअप्स ज्यादातर इतना अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि मतलब उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो फिजिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड थे, तो वो डिस्टर्ब हो गए, और ओवरऑल जो डिमांड है इकोनॉमी में वो कम हो गई है फॉर एवरीबॉडी. इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वर्ल्ड वाइड. मगर कुछ स्टार्टअप्स हैं जो बहुत पहले से बेहतर कर रहे हैं, जैसे मैं वेयर एंड शेयर का भी एग्जाम्पल हमारे पास है, और इस तरह के और भी हैं जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को बिजनेस के साथ लिंक अप कर रहे हैं. बेसिकली एक वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी इमर्ज कर रही है. पीपल हैव टू वर्क, लर्न, बाय सप्लाईज, गेट फूड, बी एंटरटेन्ड एट होम. तो जो स्टार्टअप्स इन चीजों पे फोकस कर सकती हैं, और काफी उन्हें अपना पिवट भी किया है और कोविड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वेदर दैट इज disinfecting office spaces or homes or providing products. तो जो pivot करके इस किस्म के वर्क होम बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रही हैं, और ये जो कोविड की एक जाहिर है एक चैलेंज है, इसको एड्रेस कर रही हैं, तो दे आर डूइंग बेटर. वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग. जो कोविड-19 के चैलेंजेस में हम देख रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स जो है वो बहुत आ रहे हैं, उनको जो ये ड्रैप वगैरह की सोसाइटी और उनसे वो सर्टिफिकेशन वगैरह को वो देख रहे हैं. सो ऐसे कौन से स्टार्टअप्स है जो स्टार्टअप्स कोविड-19 से पहले जिनकी एक सिग्निफिकेंस थी या कोविड-19 के बाद वो खत्म हो जाएगी, और उन स्टार्टअप्स के लिए सारे जैसे मेरी एक एडवाइस है कि वो सारे उसकी एडवाइस क्या देंगे, वो अपनी स्टार्टअप्स अपने आप को सस्टेन वो किस तरह करें, क्या वो ऐसे स्टेप्स लेके आए, वो किस तरह बैक टू वर्क जाए ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी भी रहे और वो अपने प्रॉफिटेबल भी रहे. सारे जैसे मेरे इस पे कुछ एडवाइस स्टार्टअप्स और या सारे स्टार्टअप्स के स्टार्ट करते हैं. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेकअप कर रही है. जी, जो जितने भी स्टार्टअप्स से कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद कुछ स्टार्टअप्स बंद हो गए और कुछ स्टार्टअप्स अभी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर आ रहे हैं. So, ऐसे सारे स्टार्टअप्स को आप सबकी क्या एडवाइस होगी कि वो अपने आप को किस तरह सस्टेन करे और प्रॉफिटेबल रखे?
سارا جس سے اس میں کچھ ٹپس اور ایڈوائس دوں گا اسٹارٹ اپس کے لیے. اسٹارٹ کرتے ہیں میم مرزا سے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے دے ول ہیو ٹو بی ویری انوویٹو. جو ہمارے پرانے ٹرینڈس تھے, کیونکہ اب دیکھیں ورلڈ اوور دا ڈائنامکس آر چینجنگ. اٹس ناٹ لائک اب big companies are also suffering incurring huge massive losses. آپ کے پاس disposable income کم ہوگی, so we will have to look into things or startups especially primarily تھوڑی innovative چیزیں which will have to be priced very smartly also, and everything must have a utility that they can carry, جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو, تو پھر لوگوں کو اس میں انویسٹمنٹ کرنے میں بھی اٹ ول بی ویری لوکریٹو. کہ جیسے آپ دیکھیے سم بزنسز ہیو ایکچولی بومڈ اینڈ سم بزنسز ہیو جسٹ بالکل ہی ان کا نوز ڈائیو ہوا ہے. تو وہ اسی طرح ہوگا کہ ان کو کچھ چیزوں کو, ایک تو انوویشن بہت ضروری ہوگی. وی کین ناٹ, جو پرانا ایک سسٹم تھا, اسپیشلی ہم پاکستان کے ڈائنامکس میں بات کریں تو ہمارا جو پرانا ایک سسٹم تھا کہ ہم نے یہاں سے لیا, وہاں سے لیا, وہاں سے لیا, اور اب ہمیں بہت ساری چیزیں, کیونکہ اب دیکھیں ورلڈ اوور بھی اور پاکستان میں بھی آپ کے میٹنگ ٹرینڈس چینج ہوں گے, آپ کے سینیٹائزیشن کے ٹرینڈس چینج ہوں گے, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس تھوڑی سی چینج ہوں گی. ہماری جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ بہت میجرلی ہٹ ہوئی ہے, میجرلی, کیونکہ ہماری جو کاسٹس ہیں وہ وی کین ناٹ میٹ دیم تھرو ڈلیوری آرڈرز انڈر اینی سرکمسٹانس. تو ہماری انڈسٹری میں کی وجہ سے بھی, آئی مین آئی کین اسپیک فار مائی انڈسٹری, وی ہیو ٹو لک ان ٹو اے لاٹ آف ڈفرنٹ آئیڈیاز جہاں پہ ہم سوشلی ریسپانسبلی کسٹمرس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے جو ہمارے آئیں گے. فوڈ کی ہائیجین, اس کی پیکنگ, بہت ساری چیزوں میں ہمیں ویل ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. سو یہ ایک چیز ہے, انوویشن از ویری امپورٹنٹ. Wonderful, amazing. Yusuf sir. جی آئی وڈ کنکر ود دیٹ سینٹیمنٹ. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ اسٹارٹ اپس جو بری طرح ہرٹ ہوئی ہیں, اور ہمیں مطلب میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اوبر اور کریم ہے فار ایگزامپل, دے ہیو لیڈ آف اے لاٹ آف پیپل بیکاز جہاں پہ اس کے PNB میں نے نمبرز نہیں دیکھے بٹ وی ایکسپیکٹ obviously یہ جہاں بھی فزیکل پراکسیمٹی بیسڈ اسٹارٹ اپس تھیں they have been badly hit. So generally I think کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. First of all تو جس کو ہم کہتے ہیں resilience. Resilience کا مطلب ہے کہ we are in an age of uncertainty. We resilience meaning کہ you don't just get top action but you're able to react to different scenarios which may emerge. اور اس میں ایک بیسک رول ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو برن ریٹ ہے, اپنا جو کاسٹ ہے, اس کو آپ منیمائز کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور مے بی لک ایٹ فریلانسنگ آن اے نیڈ بیسس rather than high recurring cost. تو ایک چیز ہے, اور دوسری چیز بالکل یہ انوویشن ہی ہے. I mean generally speaking یہ دور ہے اور innovation centric. Innovation is what drives productivity, it drives global competitiveness. اور وہ کووڈ-19 سے پہلے بھی گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کو ایک مینوفیکچرنگ ڈیسٹینیشن, مینوفیکچرنگ ہب بنایا جائے, را مٹیریلس کمپوننٹس پہ ڈیوٹی کم کی جائے ان کے امپورٹ پہ, اور فنش پروڈکٹس پہ زیادہ کی جائے. So innovation is important. Innovation means new products and services. آپ ابھی یہ ایک جنرل چیز کر سکتے ہیں, اور پھر ہر اسٹارٹ اپ ڈپینڈنگ آن دا ورٹیکل, ڈپینڈنگ آن دا بزنس ماڈل, انہوں نے پھر پورا جائزہ لینا ہے کہ what is the environment, what are the kind of problems, what is the big problem, what is the characteristic of the problem, how do you come up with the solution, what are possible solutions, honing down on the right one, structuring it, and then executing it. تو بھی ہر اسٹارٹ اپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. بٹ بیسکلی یس, یو ہیو ٹو انوویٹ اینڈ کم اپ ود maybe business models, products. Wonderful.
Amazing. Saira ma'am, आपके जो है कुछ remarks. आई थिंक बाकी जजेस ने काफी अच्छे तरीके से उसको कवर कर लिया. मेरी तरफ से ये कि इस वक्त जो जिनके स्पेशली बिजनेसेस बहुत ज्यादा सफर किए हैं, उनके लिए ये कि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कि इस वक्त कस्टमर की, जिसे कहते हैं ना, कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं. सो बहुत क्लोजली अगर उसको मॉनिटर किया जाए, सो उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी. जिस तरह से भी मैंने देखा कि कोविड ऑर्गेनिक एक फूड ब्रांड किसी ने लॉन्च किया, नॉट इन पाकिस्तान, मैं किसी और की रिपोर्ट पढ़ रही थी. सो बहुत क्लोजली देखें कि अगर एक चीज बंद हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इजा ने कहा कि अब उनकी जाहिर बात है रेस्टोरेंट में कोई आ तो नहीं सकता, विजिट नहीं कर सकता ड्यू टू जो भी सिचुएशन है, और अगर विजिट करें भी अगर एसओपीज का ख्याल करते हुए, तो भी बहुत कम परसेंटेज होगी, क्योंकि फेयर तो है माइंड में. सो फूड इंडस्ट्री क्या कर सकती है इस वक्त? लोग वही वाली बात जो मैंने शुरू में बताई कि तरह तरह की चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से इम्यूनिटी बिल्ड हो, तो क्या उस तरह की फूड चेन, उस तरह की फूड लाइन में कोई इनोवेशन लेकर आए, क्योंकि इस वक्त लोगों की डिमांड है, ये हर चीज मिल नहीं रही है इस तरह से. उसके बाद फिर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन, जिनका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का था, उनका भी बड़ा बुरा इस वक्त हाल हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग तो घर बैठे हुए हैं, कोई उनका चल नहीं रहा. इसी तरह टूरिज्म ने बहुत ज्यादा सफर किया, टूरिज्म इंडस्ट्री ने. सो ये देखें कि इस वक्त कस्टमर जो है वो अपनी बाइंग हैबिट्स और अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर रहा है. तो उसमें बीच बीच में काफी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जो निकल के आ रही हैं. और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह startup.pk के साथ ही अथर हम वो जो अपॉर्चुनिटीज जो इमर्ज हो रही हैं उसके ऊपर एक कर लेते हैं सेशन, ताकि बाकी स्टार्टअप्स को एग्जैक्ट पता लग जाए कि क्या क्या इस वक्त इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उसमें बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. और बाकी जो इनका ऑलरेडी बिजनेस मॉडल है उसमें वो वही वाली बात के सोचें. इस वक्त ऑलरेडी अगर किसी का वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि इस वक्त ऑर्डर्स कम हो गए उनके, या फिर उनकी सेल्स कम हो रही हैं, तो ऑनलाइन डिलीवरी का सबने, अल्फतेह ने मैसेज सेंड किया कि आपको बिल्कुल घर बैठे और हम आपको पूरी ग्रोसरी देंगे फॉरन से, जबकि वो बड़े ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेसेस थे, कभी ऐसे जितना ऑनलाइन ऑर्डर्स की तरफ नहीं आए थे. सो ये वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस ने भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने शुरू कर लिए थे, क्योंकि उनको पता था. तो उनकी मैनेजमेंट बैठी और उन्होंने सोचा कि क्या हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स तो डरे हैं, इस वक्त नहीं आ रहे हैं. सो हमारी भी कैश एंड कैरीज, जो लोकल कैश एंड कैरीज थी, उन्होंने भी सबको मैसेजेस करना शुरू कर लिए कि जस्ट स्टे काम और हम घर आपको ग्रोसरी डिलीवर करेंगे. तो वो ही वाली बात कि आपके करंट बिजनेस मॉडल्स में थोड़ी इनोवेशन सोचें कि क्या हो रहा है. स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉरेन से क्लासेस शुरू कर ली. बड़े टीचर्स ने मुझे भी कॉल की कि बड़ा मुश्किल हो रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाना. एक ऑनलाइन लेक्चर मैंने दिया, मतलब इट वाज हेल ऑफ अ जॉब, कि समझ ही नहीं आ रही थी कि स्टूडेंट पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं. वो कैमरा ऑफ कर लेते थे, फिर कहते थे जी इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करा. वो पता ना क्या स्टूडेंट्स आ, तो फिर उनकी क्या वो सुन रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता अब कहीं जाके आफ्टर 2-3 मंथ्स थोड़े से टूल्स और इस तरह के आए और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हुआ कि जिससे ऑनलाइन टीचिंग थोड़ी इजी हो गई. और तो मतलब कंटिन्यूसली लोगों ने काम किया पिछले 2-3 महीनों में. कंटिन्यूस उन्होंने सोचा है कि चीजों को कैसे इंप्रूव करना है. सो मतलब ये नहीं कि उन्होंने शट डाउन कर लिया, उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला है. तो सेल्स यकीनन कम हुई हैं बहुत से बिजनेसेस की, लेकिन इनोवेशन अगेन इज द की. ये जो जैसे कहते हैं ना कि जरूरत माँ की इजाद है, इजाद की माँ है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने. सो नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन. ह्यूमन ब्रेन रास्ता निकाल ही देगा इंशाल्लाह. तो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ऑल स्टार्टअप्स. वंडरफुल. इसमें ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है. जी मैम. एक चीज जो हमारे यंग स्टार्टअप्स में मिसिंग है वो रेजिलियंस है. हमारे स्टार्टअप्स बहुत जल्दी दे लेट गो ऑफ होप. They have to understand that whenever they start off on a business journey, businesses take time. Overnight nahi hota. They like to look at big names and then they want to become them overnight. That is not possible. So this is something that again we often face with young startups, that they have very high aspirations and very high expectations of what they're starting off with. They don't understand that there is a struggle behind all of that. तो ये एक थोड़ा सा जो हमारे young students हैं और जो young startups आते हैं, this is a little reality check that they all need to understand कि effort आपकी तरफ से, देखिए चीजें आएंगी, problems होती हैं, हर business में ups and downs आते हैं, business का एक अपना cycle होता है. कभी भी बिजनेस एक तरह नहीं चलती है. इट्स नेवर अ फ्लैट लाइन. इट विल ऑलवेज गो अप. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी मेकिंग एनी मनी. यू हैव टू
your nerves need to stay strong. Business mein and working for a salary is the difference. Ke your nerves need to be able to handle the stress of the situation, whatever it may be. But our startups start off with a big bang because they want, so everyone wants to become a Steve Jobs, but nobody wants to go through his journey. Everyone wants to become whatever they want to become, whatever their role models are, but they don't want to live their journey. They don't understand that there is an entire process, there's a time frame that's involved. They've all suffered major failures before they could become successful. Kal ek choti si mein kahin ek cheez padhi thi ke रतन टाटा ने जब अपनी गाड़ियों का अपने ट्रक से जब वो कार्स मॉडल में आए तो he had failed in his car model, so he went off to the US to Ford to sell it. तो Ford ने उसको बड़े मजाक से और बड़े ताना मार के कहा कि when you knew you couldn't do cars, why did you do cars? So he got up and he came back and he said, I am not selling this division even though it's incurring losses. I am now going to make my car division the best in the world. And he was able to do that. And then he went, and then Ford came. Ford started making losses. They came and they wanted to then buy, and he bought Jaguar of them and he bought another car or Land Rover of them. So they came, this just goes to show that koi bhi businessman zindagi mein, that's your make and break situation. Ke you're making a loss, will you sell it and shut up and come back, or will you be resilient? So ye bhi badi fine line hai to know whether you should pursue an idea or whether you should let go of it. Do you think you have the capability to pursue it? So then do pursue it. If you think you don't, to phir chhod. So ye hamare yahan thoda sa we need to, our startups need to be a little realistic also. And they also need to be a little more resilient. So that's where I say passion is very important. If you are passionate about your idea, you'll always find a solution and you'll always find an innovative solution. So this is something that I also wanted to add. Wonderful. Thank you very much, ma'am. And इसके साथ मैं भी ये काफी स्टार्टअप से बात होती थी, एक टर्म यूज होता है ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट है जो आपको एनेबल करती है टू एम्ब्रेस द फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम योर ओन फेलियर्स. और आई बिलीव कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अगर वो एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर ले, ताकि वो जितने भी उनके वो अगर फेल होते हैं और वो कोई सक्सेस भी करते, सो उससे लर्न आउट वो उससे सीखते क्या. सो आई बिलीव कि आपने काफी इसको अच्छा सम अप किया है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडे startup.pk पिच फेस्ट. उम्मीद है स्टार्टअप्स तो आपके फीडबैक से डायरेक्ट जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो डिस्कशन हुई हमारी इन पे, सो आई एम श्योर कि इनसे बहुत सारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स फायदा उठाएंगे और अपनी जो उनकी जर्नी होगी उसका बेहतर से बेहतर बना सकेंगे. अच्छा, एक और बात बताऊं, एक और सिर्फ आई ऑलवेज लाइक टू बिलीव कि ये जो बच्चे हैं ना हमारे पास, ये क्रिटिसिज्म के बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते. हम जब कोई काम शुरू करते थे तो हम हमेशा वी ऑलवेज आस्किंग पीपल कि अच्छा टेल अस व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग. हमारी कोई अच्छी चीज भी हमारे हिसाब से परफेक्ट भी हो गई है ना, तो वी वुड गो अप टू समबडी हु इज मोर एक्सपीरियंस एंड से ओके फाइंड फ्लॉज इन दिस, फाइंड समथिंग रॉन्ग इन दिस, बिकॉज वी वांट टू मेक इट वेरी गुड. ये जो बच्चे हैं दे नॉट वेरी दे डोंट लाइक टू हेयर क्रिटिसिज्म. पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव तो सुनेंगे ही नहीं, और पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है जिसमें हम इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें, वो भी इनको नहीं पसंद आता. सो ये भी एक चीज है that this new startup generation needs to incorporate, that you need to be ready to listen to positive criticism because that will help you grow. Our idea, हम judges का कभी ये प्लान नहीं होता, ये कभी हमारा कोई एजेंडा नहीं होता कि हमने आपको we don't want to let you down, we don't want to discourage you, but we need to tell you that these are the areas where you need to focus. So आपका focus shift करने के लिए बाज़-औक़ात हमें ये करना पड़ता है. So don't feel offended. ये generation बहुत जल्दी offend हो जाती है for some reason. So that's another thing that I had to point out. So now you can continue. Athar, I'll try not to unmute. यहाँ पे sorry मैं आप लोग को interrupt कर रही हूँ क्योंकि मैं एक मैसेज अभी चैट पे पढ़ रही थी. यहाँ पे शायद थोड़ी कंफ्यूजन है. इस आपके पास तो टाइम है क्योंकि ये सब साफ तो चले गए हैं. आई थिंक अथर उनको जिन्होंने आज कमिटमेंट की थी पिचेस की, उनको जूम लिंक शायद गलत गया हुआ है.
if you can check, we are here. मतलब अगर इतनी मेहनत हो ही रही है तो let's just wait for them. Check Yeah, में एक दो. Wonderful. So I will get in contact with them. मैं उनके साथ दोबारा in contact हूँ. So हम 2-3 मिनट ऑफ करते हैं अपना, मतलब इसको बेशक लाइव को आप खत्म कर दें और लाइव दोबारा चले जाएंगे ताकि हम आपस में गपशप कर सकें.